Sorry, I'm late. I'm on time. Okay. Indian Standard Time. सरकारी टाइम. हाँ, थोड़ा हैबिट खराब हो गया है. आदत पड़ गई, क्या करें. इंटरव्यूज अच्छे चल रहे हैं, देना. Of course you will. What expectation? Yes, you should be there. You are not studying so much, dedicating yourself so much for nothing. Interview तो देना ही है. How many of you are confident that you will give interview? बाकी? You people are not, if you are not confident, how will you make the UPSC think? नौकरी मांगने जा रहे हो, इंसान ने पूछा कर सकते हो ना? पता नहीं, कोई रखेगा. इसीलिए देखो, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. 3-4 लोगों का तो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे निकल जाता है. मतलब ऑफ कोर्स पढ़ते भी हैं. लाइक फाइन. Okay, today we are going to do multiculturalism. What is a culture? What is a culture? Culture. What is a culture? Way of life. Okay. ये तो conclusion बता दिया. Otherwise, practices, rituals, belief systems, food, clothing, preferences of hairstyles, everything, colors, etc., etc. Religion, region, Maharashtrian culture, Bihari culture, Keralite culture, isn't it? Okay. Region, race, isn't it? Race is also a concept. Aryan culture, okay. Ethnicity, common ancestors, Jat culture, Baniya culture, Kshatriya culture, Brahman culture, some kind of that. What else? Language. Yes. What else? Anything else? Nationality. Yes. ये अपने आप से बड़ा कैसे हो गया? Okay. Class culture. Yes. अगर आपने एक व्यक्ति को देखा ऐसे हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ है और बहुत हेप टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, and that person is standing somewhere, so immediately you feel like rich. Culture makes a nation, but a nation never makes a culture. No, national feeling of nationality also develops a culture. Specifically, in terms of India, we have nothing except लेकिन national की, it's vice versa. Because of feeling develops the nation, and because there is a national identity, it influences the feeling. If there is no entity as a geographical territorial entity, India,
what will you have feelings for? So thing has to be there. Of course, things originate with feeling, and after the thing influences the feeling. Okay. Now this all means culture. When we say multiculturalism, it can mean any of these things. Very vast concept. How many cultures are sitting in this room? Many cultures? Because we are different in our religions, in our languages, in our race, in all these things, rather. So many cultures are living here, isn't it? The concept of multiculturalism in India is a very ancient concept. It's nothing new to us. That is why when we are sitting together, it's not making much difference to us. Even if you see somebody from a different race or region or religion or with a different clothing, not much will change. You will see once and twice, but then it will be used to and accommodative. It will not be a very big trouble for you because India has so much diversity in cultures that we are very used to it since ancient times. Who were the Aryans? They came here. They means us. Came here. Isn't it? Like Aryan race ही तो चल रही है नहीं ये? We came here, started. We are sort of immigrants. No. No immigrants. You were the original inhabitant. South Indians are the original, and also some Kashmir tribals. So certain tribals are considered to be the original inhabitants, but yes, so immigration, is it a new concept? Have you seen those documentaries which talk about that this species traveled from here to here? Everything originated in Africa. Human species originated in Africa. You know now. It originated there, and since then, species have been traveling here and there, leading to many changes. So all are immigrants. Everyone is an immigrant. This means that culture is basically the evolution that happens through these movements. So in Indian context, a lot of immigration has happened, not just once, but many times. It has been a continuous flux. Vedic culture, after that, Huns, Shakas, this, that. कुछ चाइना से आ गए, कुछ अफगानिस्तान से आ गए, कुछ सेंट्रल एशिया से फिर आ गए, अलग अलग जगह से, कुछ पर्शिया से भी आ गए, कुछ इजिप्ट से भी आ गए. Many people from sea route, from this, from that. So many people came, and the best part of Indian subcontinent is that whatever came merged. Whatever came merged. Even though they have their own identity, they also get a flavor of India. We learn from them, they learn something from us. And our culture, it's not something pure. It's a evolved repository. We have learned so much from different cultures. Kushans आए. Kushans कौन थे? कहाँ से आए थे? पार्थियंस. हाँ, वो आए. उन्होंने क्या चालू किया था कुशान्स ने? Culturally, coins. What else? The Mathura art and all of these arts. Basically, मूर्तियां बनाना शुरू किया. Yes. And I do. तुम्हें देना prelims कुछ दिनों बाद. Fine. So वो आए.
अपने साथ कल्चर लेकर आए, वो हमने अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा मूर्तियां बनानी है, लो we will make all kinds of murtis now. Initially in Vedic culture there was no idol making. First idol which was made was of which god? Buddha. It was not a part of Hindu culture. Idol making was not part of Vedic culture in simple terms. Yakshas? I don't think so. NCERT says it's Buddha, but check, है ना? Just check if it is different. But whatever I know, it started with Buddhism, and from there ऐसा adopt किया हमने. अभी बुद्धा की मूर्ति मिले नहीं मिले, एकदम जहां जाओ human idol statue was Buddha. Okay, human. ठीक है? So you understand? Then came, after all this came, अरे history तो बता दो, Islam. And when Islam came, they also had a very rich culture. And when they came, they brought many new things to the culture of Indian subcontinent, like architecture, food, certain practices, and they also learned something from us. The food got intermingled. They learned about our spices. They learned about our way of dressing. Because climate ऐसा है, अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ का climate के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे. And everything they also adopted. They adopted our caste system. Now they talk about lower caste, upper caste. In Islam, there is no upper caste and lower caste. Islam is based on equality. But now, ये अशरफ है, ये अजलफ है, ये है. Full sectarianism came into being. So a lot of intermingling happened, and even though certain distance remains, but overall coexistence has been happening since then. Even now, coexistence is perfectly in harmony. Of course, there has been certain riots, certain conflicts and skirmishes, but this has happened across cultures. ये तो आज थोड़ी नई बात थोड़ी ना है. जब भी दो cultures कहीं पर मिल रहे होंगे, कहीं पर आएंगे, there will be clashes. Some people will not understand. This has happened earlier also. This is happening now also. But over time, things will come into harmony. A balance will be achieved. Then came Christians. Now Christians again wanted to preserve their culture and identity. And the reason was that earlier whoever came was awed by the superior, or what do you say, the rich culture of India or Indian subcontinent. They felt Sone ki chidiya, such a nice place, so many weather, so many this, so many that. But when Britishers came, or rather Europeans came, they came with their own sense of superiority, because industrial revolution has happened, or Renaissance has happened there, while India had still not gone through its industrial age. So they immediately branded Indian culture as inferior. And this is why when we see that Christians came, they also merged. We also impacted them a lot, but the impact was not too much, not too intricate. But still, Anglo-Indians, बहुत distance नहीं रहा. Anglo-Indians, we adopted English, and now we teach English when we go to some European countries. Yes, you know, not just Hindi teachers. In some areas, even English teachers are
from India. Yes. Now we teach them English also. Pondicherry, Goa, we adopted the culture. So India has a history of multiculturalism, and we have developed certain ethos, certain way of thinking, certain mindset, which allows for multiculturalism. In simple terms. Definitely, there are people, there are instances where parochial mindset means narrow mindset. People will always try to conserve or create defensive barrier against their own culture. As any time a new culture will come, some threats will be perceived. कुछ नया होगा तो threats perceive होंगी ही होंगी. But over time, the barriers will have to go and some kind of new balance will be achieved. As said by Hegel. Some new balance will be achieved. Now this multiculturalism, जो Indian model है, इसे कहते हैं mosaic model. Mosaic model of multiculturalism. How is a mosaic? In the same fabric, different colors are merged. ये इसको जोड़ के बना हुआ है ये फैब्रिक. So overall जो हमारा कल्चर है इंडियन कल्चर. In between Maharashtrian culture, Hindu culture, Islamic culture, Sikh culture, Jain culture, this and that. Different cultures have developed. So our pattern is mosaic. A Maharashtrian or rather बहुत Maharashtrian को लग रहा है Maharashtrian का ही culture है क्या? है ना? Kannada people have their own unique culture. And when they have their unique culture, they have not lost it. They do not just for becoming an Indian, they don't have to lose their Kannada identity. A northeastern student or a person or an individual doesn't have to lose their own identity of being a Manipuri or a Nagaland resident. They don't have to lose it. They can maintain their own culture and yet be part of the Indian culture. This is the beauty of Indian multiculturalism. This is the beauty of Indian multiculturalism. But the story is different in West. West की कहानी तो हमने आपको बताई दी थी. It started with ancient Greco-Roman culture. Then Dark Ages. In Dark Ages, बहुत लंबा चला Dark Ages उनका. 1000 साल. Now this Dark Ages, their complete focus was on religion plus language. Language was also a big barrier for them. A very big barrier. And thereby there was not much influx. Much immigration को ज़्यादा entertain नहीं किया जाता था वहाँ पे in Dark Ages. Because language one, second religion. अब इंडिया से गया एक आदमी, पहली बात तो वेदर इतना एक्सट्रीम है वहां का. यहाँ से धोती में जाएंगे और यहाँ साड़ी में जाएंगे, वहां पे तो ठंड में. बट स्टिल चलो, बहुत कल्चर में डिफरेंस था. वहां पे एंटरटेन ही नहीं करते, बात ही नहीं करते. ब्लास्फेमी, तुमने जीसस के खिलाफ कुछ कह दिया सीधा. सो रिलीजियस वॉर्स were going on. This religious wars किसके बीच में हुई थी? Caliphate and church. Caliphates and church. They have been long within the wars, and the war was cultural war only. They could not understand each other's culture. Territorial भी था, cultural भी था. And with this, the monotony or rather monoculture of West was preserved for a long time.
they did not have to face too much immigration from other cultures. At most, they had to face a little immigration, or rather some intermingling of cultures from Europe to Europe. German French में, French German में. Only difference was language, not much difference otherwise. Same religion, same practices, same lifestyle, nearly. बहुत ज्यादा difference उन्हें कभी झेलना ही नहीं पड़ा. Therefore, their mindset, their way of living developed in the sense of monoculture. They have some set ideas about right and wrong. They have some very determined understanding of this can be done, this shouldn't be done, this is to be done, and this ought to be done. Very strict and determined. Everything changed with after Renaissance. Religion became less important, state became much important, then became Industrial Revolution, then came Industrial Revolution. With Industrial Revolution, these people started to move out. Imperialism, colonies बनाई. But when you reach to a colony with the mindset of an imperialist, do you go there appreciating the culture of others? No. These people went with the mindset of a colonizer, always understanding that their culture is superior. Therefore, they always treated other cultures, may it be Asian culture or African culture or South American culture, whatever the cultures were, they always treated it inferior. So whatever immigration also happened at that time. अब यहाँ से इंडिया जब कॉलोनी था, when India was a colony of Britain, when people went to England, did they went like people go today? Firstly, it was very difficult. Secondly, whenever they went, did they get the same respect or the equal respect? No, they were always felt like, अच्छा, इंडिया से आए हो, नीचे बैठो. क्योंकि हम क्या थे उस वक्त? स्कॉलर. तो यहाँ जब इमिग्रेशन हुआ भी, तो तब भी उन्हें बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा. That immigration was not affecting their culture because the people who went there adopted into their culture. More, अपनी personal practices अपने तक रखते थे, but mostly they adopted their culture. Started wearing coat, suit, overcoat, hat. भाई हमारी टोपी भी कम गरम थोड़े ना, ऐसे कैप वैप लगा के भी तो चल सकते थे, लेकिन वहां पे कल्चर क्या था? हैट. तो वहां गए हैं तो क्या पहननी पड़ेगी? हैट. Similar type. If you will trace the history, the influence of Western culture was such that even the queens of princely states and rather kings of princely states started adopting in their clothings, in their eating habits, the Western culture. अब भाई रोटी fork और चम्मच से कैसे खाओगे? भाई रोटी खा सकते हैं क्या fork से? खाते थे. Because it became a class matter. Even the dressing, साड़ियां भी कैसे बना लें? Victorian style. चीजें Victorian style, European style. Painting, Victorian style. English paintings. उन्होंने कहा light colors, pastel colors are beautiful. हाँ, light pastel colors are beautiful. Vibrant, bright colors are not. Miniature westernization. हाँ, अभी भी है, अभी भी चल रहा है. I'm not saying it's not going on there. It is still there. We were immigrants, that's why we accepted immigration in comparison to other cultures. No. No.
वो तो मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, लिखना थोड़ा ना ये. So in West, they did not face the heat, but after the process of globalization, जब सब फ्री हो गए है ना 1947 50s के बाद, when colonies became free, they developed into independent nations. People who have been there, वो तो adopt हो चुके थे वहां के cultures में, लेकिन immigration थोड़े ना रुका. Rather, immigration became really strong. But this time, the things were different. Now the immigration, when the people went, they did not went as a people of colony. They went as a citizen of a country. Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Sri Lankans, they went as residents of Congo, residents of Argentina, residents of Brazil. And when they went there with their identities, they took their culture and they took pride in their culture. They started taking pride in their cultures. फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारी खाट क्या बुरी है, तो उन्होंने कहा लिटिल इंडिया बनाएंगे यूरोप. अब लंदन के अंदर ही बनाएंगे एक छोटी सी कॉलोनी, उसका नाम क्या रखेंगे, लिटिल इंडिया. वहां पे खाट में बैठ के मटर छीलेंगे. इंडियन कल्चर. We will celebrate our Diwali. We will celebrate our Holi. People from different religions started re-emphasizing or asserting their identities. हम लोग क्या कम है, हम भी अपनी सारी religious practices को follow करेंगे. मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे छोटा सा मॉस्क की जगह दे दो हमें, है ना, हमें गुरुद्वारा बनाना है, हमें वहां पे लंदन में लंगर चलाना है. Because that's our identity of a Sikh. And we started, all the nationalities started reasserting their own identities in the Western countries. Initially, there was not much problem. Not much. उनको लगा पहले जैसे रहेंगे ये लोग, लेकिन पहले जैसे रहे. अब कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि पीछे they are not coming from a colony but an independent nation. तो वहां से उनके अंदर जो स्ट्रांगनेस आई, उन्होंने assertions चालू किए. उन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे ये वाली लैंग्वेज भी पढ़ेंगे. कनाडा में there was this what is the second language of Canada? थर्ड होगी फिर, पर पंजाबी भी है ना. मुझे नहीं पता सेकंड थर्ड या फोर्थ है, कौन सी लैंग्वेज है, बट पंजाबी इज ऑल्सो. यू सी, हम गए कनाडा, वहां पे जाके व्हाट इज दिस assertion of culture. And now these people first time faced the heat of multiculturalism. So many identities living together and asserting their own cultures. And when these ethnic, linguistic, religious groups started to assert their own cultures in Western countries, they couldn't understand. यार ऐसे कैसे चलेगा, ये मुस्लिम लड़कियां हिजाब क्यों पहनकर आ रही हैं, ये सिख पगड़ी क्यों पहनकर आ रहे हैं, why are Sikh wearing this pagadi? And they started to question that you cannot. So certain Sikhs carry kripan, they wear a kada. Now these people started having problems. This is a weapon, you can't carry it to public places. You can't carry weapon. You can't wear a metal because this can be used as a weapon. And now people are like, हम तो पहनेंगे. This is our culture. Petitions, processions, same. सब हमने वहाँ पे किया. Justice. Muslims started to assert their own culture. In our religion, there are more marriages allowed.
We can take up 4 wives. कहीं पर वेस्ट की कंट्रीज को लिए तो बड़ा नई बात थी ये. मैंने कहा 4 wives, ओके. उन्होंने उस समय पे जब वो लिबरल थे, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तब ये सब कंसेशन ले लिए. अब प्रॉब्लम आ रही है उन्हें, क्योंकि not just population, now they feel threat to their own culture of liberty, equality and justice. They feel, and why they are feeling this threat? Because they still consider the superiority of their culture. Demography is also changing. Yeah, that is another case, that now the demography is also changing. They are realizing that the population of other cultures is rising, and slowly there might be some changes in democratic process where they might not be majority. Like the Americans have their distinct gender crisis. Gender crisis. Yeah, that you are identifying this, that. Don't let me laugh here, but there it is serious. I'll tell you what the issue is. Now these people have been very open about certain things because liberty has been इनके revolution. देखो इनकी starting समझो. Western culture is based on revolutions. American Revolution, British Revolution, French Revolution. Now their culture is developed by asserting or fighting for the liberty or freedom. Now they cannot lose it. जो चीज इतनी मुश्किल से मिली हो, वो उनकी core value बन गई है, and that has served them well also. When they say they wanted to support liberalism or they wanted to support liberty, बहुत फायदा मिला इन्हें liberty से. Because they had liberty, enterprises like East India Company could be opened. Isn't it? It was liberty, economic liberty. And because of liberty, industrial revolution could have happened there. It is because of liberty, the research, innovation and science have progressed there. Isn't it? Because of this liberty, many new things have happened there. The art. हमारे यहाँ abstract art बना दो, आज तक लोग हंसते हैं. But वहीं से तो appreciation चालू हुआ. So liberty is very core value. और जहां अब उन्हें किस चीज से डील करना पड़ रहा है? The non-liberal policies of other ethnic groups. उन्होंने कहा हम लोग तो इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ नहीं करेंगे. कास्ट क्या है ये? इंटररेशियल मैरिजेस अलाउ नहीं करेंगे, हम जेंडर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. You know, that now these countries have started taking test. British way of life, American way of life. आने से पहले टेस्ट दो. जी, Germany, you have to give a test whereby they ask the question like, are you comfortable with your son or daughter being a homosexual? According to them, if the parents are not comfortable, they are not suitable for this country. Why? New culture is coming. No, हाँ, they're like कि यार इतनी liberty वाला आदमी तो चाहिए हमें, है ना? Now they have started. लेकिन उसका रिजेक्शन भी होता है, वही सब प्रोटेस्ट होता है, फिर उसको हटा भी देते हैं. मतलब they are still struggling कि इनका करें क्या? How to deal with multiculturalism? Simple. And specifically after terrorism, the instances in this specifically in USA and Britain, terrorist attacks, 9/11, this multiculturalism became a kind of a
clash of civilizations, specifically between West and Islamic nations or practitioners. वो एक अचानक से एक अलग ethnic कह लो civilizational clash बन गया. And now the continuous clash is going on. Now this assertion of all these जितना भी है ना, America first, this first, that first, ये जितने भी सारी चीजें चल रही हैं, what is this? They are trying to preserve their own culture. हाँ बिल्कुल, पर ये जीएस का आंसर है नहीं. लिख सकते हो, you don't have to explain. Burning of holy books, again, what is it? Assertion of खुद के कल्चर को बचाना है. अब जो एथनिक ग्रुप्स वहां रह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? अब देखो, ये हमने अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे जल्दी से, है ना. देखो, नोट्स में ऐसा कुछ खास है नहीं. नोट्स तो आप आज पढ़ लो, कल पढ़ लो. 3 मॉडल हैं, वो मैं बता दूंगी. इसके अलावा अलग अलग टर्म्स हैं, वो टर्म्स कल्चरल रिलेटिविज्म वगैरह है, वो हम डिस्कस कर लेंगे. द रियल थिंग इज अबाउट द issue of multicultural. If you understand, then you will be able to write all answers. ठीक है, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से समझते हैं, बिकॉज इंडियन में आप लोग बायस हो जाओगे. इंडियन में भी देख लेंगे, है ना. सर, अमेरिकन कल्चर. सो अब अमेरिका के अंदर सपोजिटली ये हमारा अमेरिका है, ये इंडियन रेजिडेंट्स हैं, ये श्रीलंकन रेजिडेंट्स हैं, और ये अफ्रीकन रेजिडेंट्स हैं. ठीक है, इंडियन पीपल, और चलो ये इसको ऐसा कर लेते हैं, ये अरेबिया से हैं, सऊदी अरेबिया से, है ना, सऊदी अरेबिया से हैं, या अफ्रीका से जो इस्लामिक केन्या वगैरह से आते हैं, है ना. थोड़ा सा और उसको कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं अफगानिस्तान से, ये इंडिया से. Now Indian people want to assert their own culture. They say, ये यूएस से, दिवाली पे छुट्टी करो. We want छुट्टी on Diwali. We want celebration or grant from government or a place from government where we can build our own temple or our own India house so that we can meet and have chit chat among our people. Fine. Now these people are saying from South. Okay. Saudi Arabia. South America. Saudi Arabia. These people are saying that we will wear hijab. We will not let our daughters or women drive cars. हम उन्हें अकेले नहीं भेजेंगे ऐसे. Now school trip is going. All students have to go to the camp for camping. Now the parents of these particular parents, they don't allow their daughter to go. No, we won't allow her to go outside. And now teacher says, "Kaise nahi jayenge?" So teacher comes and tries to influence, but they say it's our culture. We don't allow our daughters to go out. These African people, they take their daughter to Kenya or different wherever they are, and they get the female genital mutilation done there, and now they bring back the daughter to US. What is that? In that the sexual organs are sealed basically. And now this girl, when comes back, she joins the school, and now she talks about this to the other friends, and this creates a psychological impact on the US people. Now they're like, कैसा mindset travel कर रहा है हमारे बच्चों पे? And these are saying
This is our right. This is our culture. This has been done since traditions, and we will do it now. Afghanistan, again, similar problems. पढ़ने नहीं जाने देंगे, या फिर the woman will do all the work of household and it is okay to beat wife, है ना? One day the husband comes back and beats. The neighbors are like, and the police comes. The woman also says, oh, it's our internal matter, you go out. But it creates problem in the overall culture of America. Now, American people will want what? The original inhabitants will want what? That they should adopt the American way of life. खैर अमेरिका का केस थोड़ा डिफरेंट है, उसमें मेल्टिंग पॉट है, हर कोई अडॉप्ट कर लेता है ना? यहाँ पे यूएसए की जगह पे और कोई कंट्री कर लो, फ्रांस कर लो, ताकि तुम लोगों को गलत एग्जाम्पल ना चला जाए मॉडल के साथ, फ्रांस करो. So now French government is wanting to curb their original identities. वो कहते हैं नहीं नहीं, ये फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन अलाउड नहीं है, मूवमेंट इज गोइंग ऑन. मैंने कहा नहीं, ये प्रैक्टिस इज अलाउड नहीं, यू कैन नॉट बीट करना है अफगानिस्तान जाओ, नॉट हेयर, वी विल पुट यू बिहाइंड बार्स. जर्मनी बच्चों को मार देते थे, हमारे यहाँ तो चपट लगा देते हैं. किस किसने खाई है चपट? सबने खाई है? कोई ऐसा है जिसने चपट नहीं खाई हो? चपट खाई है ना? चाटा, ठीक है. वहां जाके बच्चों को हमारे इंडियंस ने भी 2-4 ने मार दिया, सुन नहीं रहे थे बात. वहां पे चाइल्ड केयर वाले आए, उठा के ले गए. अब इंडियंस के ही बाहर जाके बच्चे धमकी देते हैं, हाथ मत लगाना. यू अंडरस्टैंड? हमारे यहाँ नॉर्मल है, उनके यहाँ नहीं है, तो उनके यहाँ उठा के ले जाते हैं. सेम हैपेंस नाउ. दीज पीपल से हिजाब नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट व्हाट? देयर कल्चर. एंड एथनिक immigrants are trying to do what? Assert their own culture. जहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है वहां पे वो लोग क्या कहते हैं? जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है हम कहते हैं वोटिंग राइट्स भी दो हमें, हमारे ये वाले राइट्स भी दो हमें, अपने एथनिक सेलिब्रेशन राइट्स दो हमें, ये राइट्स दो, हमारी लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज बना दो, हमारे इसको वो करो, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने दो जहां पे हम अपने टाइप की एजुकेशन दें. ऑल ऑफ दीज थिंग्स सिंपल. तो जब उनकी डिमांड्स और इनकी वो मैच नहीं करती तो क्या हो जाता है? When now these people wanted to have only the qualified people, West wanted to have only the qualified people. ऐसे नहीं जा सकता कोई भी. अनएम्प्लॉयड लोगों को नहीं भेज सकते हम उधर. अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों को भेज सकते हो क्या? ज्यादा हो रहे हैं, चलो एक बार यूएसए भेज दें. लेगा ही नहीं यूएसए या फ्रांस, क्यों नहीं लेगा? They take qualified people, something which is useful for their economy, for their country. They take. When they take, now अब जब आए हैं तो किसी की तो जॉब रिप्लेस करेंगे ही ना. And now they say job crisis, that Indians come, Chinese come, take up our jobs, more stringent immigration, more this, more that. So protective policies are mere trying to find some remedy for multiculturalism. This is a problem of few countries, Like Canada. है ना? Like Canada, Sweden, है ना? And recently Japan is aging very fast, you know, but not all countries. So
In that sense, essence of multiculturalism समझ में आ गया? इंडिया के केस में बताओ. पास्ट को नहीं, प्रेजेंट का बताओ. रोहिंग्या Muslims. Rohingya Muslims, refugees, they came from Myanmar, and now Bangladesh is in northeastern areas. नहीं GS, हाँ नहीं पता है मुझे वो तो GS में क्यों घुस जाते हो बीच बीच में? कोर इशू बताओ. Culture, like Assam, You understand? And the policy of liberty on the basis that like in Western countries that have taken the refugees, like they are creating more of a problem, not the people who have come from the legal ways. Like for example, जैसे लोग जो political refugees या फिर और countries के refugees लेते हैं, like they are creating the main problem. All of them. Culture तो assert होगा ही होगा. जैसे ऐसे समझ लो. देखो, very simple. If today you go to France, Diwali comes, what will you do? Nobody is celebrating. But you will celebrate. Huh? Like they will burst them on the New Year. अगर छोटे पहले मैं क्या दूँगा? भाई ये क्या ही हो, यही तो बात है. You समझे? Cultures, intermingling of cultures will create problem. In India, it is not much problem because we all are so diverse. We are okay with it. We are like, okay, तुम तब फोड़ लो, हम अब फोड़ लेंगे, है ना? तुम बर्फी बना लो, हम काजू कतली बना लेंगे. It's okay. मतलब तुम सीधे तवे पे रोटी बना लो, हम उल्टे पे बना लेंगे. सिंपल. नॉन पे ज्यादा नहीं है. हम गंगा जल पी लेंगे, तुम वाइन पी लो. यही है ना? ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हम लोग अडॉप्ट कर जाते हैं. हमारे लिए सारी चीजें ओके. वी आर ओके विद दी. तुम भगवान को नहीं मानो, कम मानो, ज्यादा मान लो, बहुत ज्यादा मान लो, तुम भगवान ही बन जाओ. All spectrums allowed. Huh? You know, people claim themselves to be God, and there are people who reject God. Absolutely. किसी को कुछ प्रोसिक्यूशन कभी महसूस हुआ? सब चल रहा है यहाँ पे. वहां पे अब खैर वहां पे लिबर्टी के बेसिस पे वहां पे भी बहुत हो गया, लेकिन पहले ब्लास्फेमी कहाँ से आया टर्म? हमारे यहाँ थोड़ा ना ब्लास्फेमी टाइप के टर्म्स. हमारे यहाँ शुरू से चल रहा है सब. स्पेक्ट्रम था. उनके यहाँ नहीं. वहां पे कोई बोलते हैं आई एम जीसस. Will it be acceptable? No. You understand? तो वो थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है. एंड wherever there will be cultural difference, वहां पे क्योंकि कल्चर्स अब मिंगलिंग चालू हुई है, तो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट नए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं वेस्ट में भी. एक हमारा है ब्रिटिश मॉडल, जिसे बोलते हैं सलाद बॉल मॉडल. सलाद बॉल मॉडल. सलाद कैसा होता है? टमाटर काटा, प्याज काटा, गाजर जो भी होता है ये सब काटा, खीरा, बीटरूट, and then you mix it with a little lemon and salt. Lemon and salt. This is salad ball. ठीक है? Things have their own identity, very fixed identity. You can identify this is tomato, pick it up. This is beetroot, pick it up. पता चलता है? Separate. At the same time, a little covering is also there on the vegetables. British model, or rather European model. In Europe, people will not intermingle directly too much. They will not start
adopting your culture, or they will not let you deep into their culture. They're like, okay, you are Indian, अपने तक रहो, professionally मिल लेंगे, once in a while friends बन जाएंगे, लेकिन not too much of adoption of any culture. Indians will have their own culture and Britishers will have their own culture. Britishers will not start celebrating Diwali, and Indians there will not be equally enthusiastic about Easter Day. तो अपने अपने कल्चर चला रहे हैं, थोड़ा बहुत मिंगलिंग भी है, ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ भी है, बट नॉट टू मच. सलाद बॉल. एंड नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉट. व्हाट इज मेल्टिंग पॉट? यूएसए. कोई भी जाता है वो क्या बन जाता है? अमेरिकन वे ऑफ लाइफ. दे बिकम जस्ट लाइक चाय. दूध डाला, चाय पत्ती डाली, सब अलग अलग डाला, बट अल्टीमेटली चाय बन गई. So it's an American way of life. Everybody goes and mostly, not always, mostly gets adapted to their way of life. खैर अब यूएस में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर टेररिज्म, बट इनिशियली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. अब थोड़े से वो लोग प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बट इट्स स्टिल अ मेल्टिंग पॉट. इंडियंस भी जाते हैं तो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में ढल जाते हैं, सब जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं लगभग. तो 3 मॉडल्स: मेल्टिंग पॉट, सलाद बॉल, मोज़ेक. लिख लो. बच्चे किसी को बुला के लाना. वेयर आर यू? कहाँ पे हो? मेरे को यहाँ पे वो चाहिए था, चार्जर, चार्जिंग के लिए. हम्म. हम्म. स्कॉटलैंड वाले लोग वीडियो देखने मांगते हैं, सेफ कंट्री वो लोग, यूएस वाला लोग उसको देखने मांगते हैं. हाँ, ना डाइवर्स मान है, होता है कि ना, वो लोग वो बनाते हैं गुड, प्रॉपर गुड बनता है, उसको इंटर कर नहीं सकते. गुटबाजी तो हर जगह है. इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी है, वेरी फ्लेक्सिबल. और खासकर कि आप बताओ, दुर्गा पूजा होती है दिल्ली में, खूब पंडाल बनते हैं बड़े बड़े. वेस्ट बंगाल का था, यहाँ पे बनने लगे, हमने अडॉप्ट कर. इवन वो होती है गुड़ी पड़वा पे, वो जो मटकी लगाते हैं ना, बट दिल्ली में जहां जाओ गुड़ी पड़वा वाले दिन मटकी लगी हुई है. महाराष्ट्रियन था, अडॉप्ट कर ले. इवन ओनम, हाँ ओनम, ओनम पे मैंने देखा है कितना कितना वो मिलता है, वो वहाँ के टेम्पल्स में, और वो फूड मिलता है वैसे वाला. आई हैव सीन पीपल डेकोरेटिंग देयर व्हाट यू से रंगोली एंड ऑल. We are very adaptive and this is our strength. Why? Because we have been there. So historically, I'll tell you why. Because हमारे लिए चीज नई नहीं है, हम लोग कभी भी मोनोकल्चर नहीं रहे. We have never been an isolated culture which has not been touched by other cultures. We have always been exposed. हम लोग ना तो लैंडलॉक कंट्री हैं, हमारे बॉर्डर्स हमेशा पोरस रहे हैं, बहुत रिजिड हमने वो नहीं किया है. थर्ड, अब इंडियंस होते ही अच्छे हैं. और क्या सुनना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ. अब हम हैं ही इतने अच्छे, कोई क्या करे. Right, that the cultures who are having only gods are like more. No, we cannot write that. बिल्कुल नहीं.
many African tribes or many African cultures, they have their polygods, but no openness to outside cultures. मैं समझा नहीं पा रही है, तुम समझ नहीं पा रहे. देखो, it's like we have been exposed so many times. Something like this, that a person who has been exposed to many viruses develops some immunity. When the new virus comes, the immunity kicks in. Similarly, like this, we have been exposed to outside cultures, different cultures, the diversity so many times that we have become immune to little bit changes. It's okay if somebody says, I am from this culture and I do this. We have so many weird things around us. We don't even, take offense at it because it has become the new normal. Recently, I heard that certain northeastern people even make some cultures, some tribal cultures, even make chutney or chutney of ants, the red ants, है ना? Red ants की चटनी बना के वो लोग they consume. But it was okay. It was new thing, but it's okay. Did we take offense at it? No. किसी को offensive लगा? किसी ने चिल्लाना चालू किया? नहीं. क्यों नहीं किया? It's okay. It's their culture. We respect that. And the reason is we have seen so many different things, so many that we have become immune. But जो West था, वो कैसा था? Unexposed. At most, they had the diversity of language, not much. All of them nearly similar in eating habits, similar in religion, similar in this and that. Everything was very similar. अब जब उन्हें exposure मिला different cultures का, तो उन्हें आई problem. समझ में आ गया? It's about that immunity thing. They are still fighting in America. Whites and blacks still they are fighting. And वो लोग they will definitely have conflicts. वहां पे अभी भी उतना वो नहीं है. And one reason is because they approach it through. अरे ये वाला नहीं, ये वाला मेरा. हाँ, ये लगाओ. ये मेरा नहीं है ना, मेरा चार्जर है मेरे पास. चार्जर तो है, मुझे लगा तुमने यही उठा के लगाया है. तुम भी सोच रहे होंगे कैसी मैम है, टैबलेट भी चार्जिंग पे नहीं लगाती. हाँ, क्या कर लेता है? अच्छा होता है, पता नहीं, मेरा तो खत्म ही हो जाता है. iPhone का battery ज़्यादा discharge ज़्यादा battery बहुत जल्दी चलता है. ओके, चलो. हाँ, अभी जो चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, बहुत ज्यादा ना प्रिवेंट कर रहे हैं कि वेस्टर्नाइज ना हो. दे आर प्रमोटिंग मोर एंड मोर इंडियन कल्चर. ये ना इतना वो assertion है, ये हमेशा चलता रहेगा. क्या पॉइंट हुआ ना, नहीं कर पाओ. बोलते हैं कि ये इतना हर कल्चर होता है कि ना लड़की को बहुत सारा अलाउ होता है, तो वो चीज गलत है. बट ना अल्टीमेट तो कल्चर में था, वो चलते चला है. बट अब वो चीज गलत है, वो समझाया कैसे? समझाने की जरूरत नहीं है, चीजें चेंज हो जाएंगी. like now if you see somebody or you hear intercaste marriage, what do you feel? Normal, ना? It was not normal. अभी वही तो मैं कह रही हूँ, गांव में भी धीरे धीरे आएगा. It's a process. All change is a process. गलत सही कि ना आप कल्चर चेंज करना है.
जो मेरा ओन कल्चर था उसमें था नहीं। कोई भी कल्चर कभी स्टार्ट, और देखो कोई भी चीज स्टैग्नेंट रहेगी ना, हाँ। सड़ जाएगी। एवरीथिंग, culture, your mindset, your intellect, everything should evolve. If you say whatever my thought, like right now, okay, understand like this, though it is not part of our course, yeah, quick 2 minutes. If whatever you were thinking in your college or at school level, if you continue to think like that now, will you be successful? And if you continue to think after 2 years what you are thinking now, then also not successful. This means that if you have to remain successful, relevant, according to the times, according to the situation, you must keep evolving. Evolution must happen with everything in our life. The way you interacted with your mother when you were 1 year old or 2 year old, do you interact with her right the same way now? No? The relationship between you and your mother, you and your father, you and your siblings, has it evolved? It's bound to change. Currently, my son cannot sleep without me. At night, he requires mother. My son clings to me right now. After some years, will he be the same? No. Part of evolution. After some time, he will go somewhere to study. Evolution. This is the process of evolution. And if we do not evolve, this means we become stagnant. ना भारत कल्चर हमारा कल्चर को ना हार्मफुल है, उसको क्या करना? जैसे आज का जनरेशन में ना जीन्स और फटा जीन्स पहनने का वो फटा जीन्स, ओके, अच्छा ये मांग मेरा आ रहा है। और जैसे शॉर्ट्स ना शॉर्ट ड्रेस पहनने का नहीं, अच्छा शॉर्ट ना ड्रेस पहनने का नियम आ रहा है, ये सब बहुत लोगों को लगता है गलत है, और कह रहे हैं ना बहुत मेंटालिटी का गलत होता है, तो अच्छा ब्रॉड लेवल से भी गलत है, नॉट श्योर, बट ना वही है कि ना वो सब में क्या करना है, जो हार्मफुल हमारी सोसाइटी की उसको कैसे बदलना। देखो जो हार्मफुल होगा वो सोसाइटी अपने आप रिजेक्ट कर देगी। तो ये इस एज को पसंद है, इस एज को लग रहा है वो तो 10 साल रहता है, ये तो हमेशा रहेगा। देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय मधुशाला, हैव यू हर्ड? अमिताभ बच्चन के फादर ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने, एंड देयर इन दिस मधुशाला पोएम देयर इज 2-3 lines which say about that, मुझे ना याद एग्जैक्टली नहीं आ रही है। इट सेज मीनिंग ऑफ दैट लाइन इज दैट हर पीढ़ी को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी हालत, मतलब सबसे अच्छी सिचुएशन उन्हीं के टाइम पे थी, जो आगे आ रही है वो बेकार है। हैव यू हर्ड योर पेरेंट्स से, अरे खाना तो हमारे टाइम पे होता था, रिलेशंस तो हमारे टाइम पे, इज्जत तो हमारे टाइम पे किया करते थे पेरेंट्स की, पापा ने जो कह दिया उसके आगे हम लोगों ने कदम आगे नहीं बढ़ाया, जो उन्होंने कह दिया। उस वक्त पे बना करती थी वो बाजरे की खिचड़ी, क्या खाना हुआ करता था। ये एवरी जनरेशन थिंक्स, हाँ अभी देखेंगे जीनोसेंट्रिज्म हो गया तुम्हें तो तो इट इज लाइक हर पीढ़ी को लगता है कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत परफेक्ट है, लेकिन जो अगली पीढ़ी है वो खराब है, वो चीजें बिगाड़ रही है, हमेशा लगेगा। देखो I don't know, if you go by the data, life expectancy has reduced or increased?
IMR decreased or increased? MMR, global GDP, freedom बढ़ा है, equality बढ़ा है. Now there is equality of opportunity. आज से तुम चले जाओ 100 साल पहले, ये लड़कियां जितनी दिख रही है ना, दिखती नहीं. और लड़कियां छोड़ो, बहुत सारे लोग नहीं दिखते, कास्ट और इन सब डायनेमिक्स में ही फंस जाते. और ये ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन तो देख ही नहीं पाते, है ना. सो इट इज लाइक इट्स ओके. मयंक ने क्या पूछा है, मैम कैन वी से फॉरेन कंट्रीज हैव बेटर अडॉप्टेड मल्टीकल्चरलिज्म एज इंडियंस होल्ड हाई रैंक्स इन देयर गवर्नमेंट बट वी डोंट सी सच हेयर इन आवर कंट्री. नहीं नहीं मयंक, हाँ, वी टोटली डिजर्व दैट. हमारे यहाँ खूब एक्सेप्ट, एक्चुअली हमारे यहाँ पे कोई फॉरेनर रह नहीं जाता ना, the culture merges, है ना. And this is also true that we have not had immigration मतलब in recent past. Earlier we used to, कोई भी कहाँ immigrate करना चाहता है, a better place, right? So currently according to whatever metrics we have, like I just told you, like GDP, MMR, IMR, living lifestyle, air pollution, all of these. In these metrics, West fares well. That is why immigration is from these countries to their countries, right? In India, we are facing immigration from where? Countries which are lower in these metrics from us. Bangladesh, Myanmar, all of these countries we are facing immigration from. तो अभी हमारी जो टोटल, अगर हम इंडिया को वैसा बना ले, that a Britisher or a American citizen will feel like, let's immigrate to India and take up their citizenship and take up the important places, then maybe. खैर हमारे यहाँ पे और हमारे यहाँ भी नेचुरलाइजेशन होता है. Naturalized citizenship is allowed in India. If they want, they can take up the citizenships. But पहले हमें इंडिया को वैसा बनाना पड़ेगा. नहीं तो मैं बता रही ना, बनाना पड़ेगा. अगर आप बना लो तो आ जाएंगे. जहां अच्छी तुमने जगह बना ली वहां पे इमिग्रेशन आएगा. लोग जा रहे हैं ना, मरने के डर से भी ऊपर होकर जा रहे हैं. In small boats these people are going, in which they know that there is a danger to life, big danger. See my previous question क्या नीचे करके दिखाओ अंकित. Previous question. Ma'am, is transition towards developed economy may impact multiculturalism of a country? Means developed economy अब तो connected हो रहा है world. खैर it will not remain much more. So with the globalization and with the internet, things are becoming more homogenized, or rather दोनों ही चीजें हो रही है, ग्लोबलाइजेशन भी और ग्लोकलाइजेशन भी. What is globalization? Freedom of movement between people, information, anything happening in Ukraine, immediate photos. Anything happening in Hamas, Israel, immediate photos. Globalization, people can go, reporters are going, this and that, everything is there. Localization is also happening. Local cultures are also trying to preserve their own identity. उन्होंने कहा नहीं देखो ये वाले बेसन के लड्डू हमारे बनाते हैं हम, GI tag. So localization. Globalization is also happening. Globally, local products are also becoming famous. Like K-pop culture. What is K-pop culture? Korean dramas. How many of you know about Korean dramas?
देखना नहीं देखना नहीं है, क्यों? वहाँ पे बहुत रिस्क फॉलो हो रहा है नहीं उसके लिए मैं दिक्कत नहीं है लेकिन मैं है? ड्रामा कोरिया में रेसिज्म फॉलो होता है इसलिए नहीं देखना कोरियन ड्रामा। अच्छा, सब एक ही लगता है कैरेक्टर्स को पहचान नहीं पाते। स्ट्राइक के तौर पे बोल दिया छोड़ दिए अच्छा, कौन कौन देखता है? किसी ने इंडिया के बाहर की कोई मूवी देखी है? कौन सी देखी है? अरे नहीं, हॉलीवुड को छोड़ के। any Chinese movie you have watched? Japanese? Apart from Squid Games, cartoons nahi. Parasite, yes, South Korea. Okay, only the popular ones. Okay. वो कौन सी कल्चर की? कोरियन की है। इन्हीं को कहते हैं बेटा के पॉप, है ना? नहीं नहीं, के पॉप नहीं, कोरियन का। सो कोरियन हैज बिकम अ रियली impressive culture. चलो लिखो 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 लिखो, अब तुम्हें बात समझ में आ गई है लगभग, है ना? लिखो, multiculturalism is both a descriptive and prescriptive concept. Both descriptive and prescriptive concept. As descriptive, it shows the diversity of cultures existing together. As descriptive, it shows the diversity of cultures existing together. And as prescriptive concept, it highlights the positives of diversity. Positives of diversity. Next term, cultural, या फिर this is also known as cultural pluralism. This is also known as cultural pluralism. That is different cultures living together. Different cultures living together in unity by respecting diversity. और डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव हम कई बार कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन्स व्हाट इज, व्हिच डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। प्रिस्क्रिप्टिव कौन देता है प्रिस्क्रिप्शन? डॉक्टर। क्या कहता है? ये करो, ought to, बट क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। will, next point, will Camelica, K-Y-M K-Y-M-L-I-C-K-A, Camelica, will Camelica pointed out that multiculturalism has existed in Indian culture since ancient times, but
But for West, it is a new concept which originated in 20th century. Is a new concept which originated in 20th century. Next point. William James, John Dewey, William James, John Dewey, जॉन ड्यूई. ड्यूई तो पता है, DEWEY. जॉन ड्यूई तो हमने कई बार लिख लिया. जॉन ड्यूई made multiculturalism as a concept through their pragmatic theories. Through their pragmatic theories. अब दो कॉन्सेप्ट होते हैं. नेक्स्ट लाइन में लिखो, और लाइन में मत लिखो, बस बना लो, ऐसे बनाओ. एथनोसेंट्रिसिज्म, जीनोसेंट्रिसिज्म. एथनोसेंट्रिसिज्म है, जीनोसेंट्रिसिज्म. एथनोसेंट्रिसिज्म क्या मानता है? हमारा कल्चर सबसे अच्छा है. Accepting your own culture to be superior. Xenocentrism, दूसरे का कल्चर बहुत अच्छा है. Accepting other culture to be superior than our own. लेकिन दोनों में ही प्रॉब्लम है. If we say our own culture is the best and all other cultures are inferior, then this is problematic. Like if we say only wearing sari makes a person ethical, respectful, decent, and wearing skirts or whatever makes a person less decent. This is basically our prejudice, our own limited understanding of their culture. Simple term, this is ethnocentrism. If we say only our food is the best, only our this is the best, ethnocentrism. Xenocentrism, अपना तो सब बेकार है, दूसरे का ही अच्छा है. Sari is not the best way. Jeans and t-shirt should be worn. That is the better way. No. It's again a problem. If we say Western things are the good ones, Indian things are the bad ones. Again problem, xenocentrism. इसका solution क्या है? बीच का रास्ता. Cultural relativism. Cultural relativism. Each culture should be evaluated from their own perspective and context, with no, each culture should be evaluated from their own perspective and context, with no hierarchy of higher and lower. With no hierarchy of higher and lower.
लिखो नेक्स्ट हेडिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर। नंबर 1 मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब एक ही टाइप का कल्चर। culture which considers itself superior, culture which considers itself superior and do not respect other cultures. Therefore expect minorities to assimilate. Therefore expect minorities to assimilate in the homogeneous culture. In the homogeneous culture. Example, 19th century Western countries. Other examples like Saudi Arabia, Pakistan, Israel. There are Judaism or Jewish culture is the dominant culture. Israel, पर एक उसके ऊपर dominated मत लिखो Israel. Jews home, तो वहां पे बाकी कल्चर्स को इतना वो नहीं है. मत लिखो, रहने दो, मत लिखो Israel. हाँ हाँ नहीं लिखो, इतना हर चीज लिखनी जरूरी भी नहीं. Yes, Japanese and South Koreans, or rather Koreans, they consider Mongoloid race to be the superior and others to be different or polluted. इंडिया में तो सब मिलता है, तभी तुम्हारी यही तुम्हारी ब्यूटी है ना. Japanese and Koreans believe Mongoloids to be pure and others to be non-pure. Then बाकी तो multiculturalism. इंडिया में since ancient times, यूरोप में और वेस्ट में आफ्टर 19th century. लिख लो. Multiculturalism has been there in India since ancient times. But in West from after 19th century. अब लिखो नोट. मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर ये तीनों आ जाएंगे. मेल्टिंग पॉट, ये तो नहीं बताऊं, मेल्टिंग पॉट वगैरह लिखवा दूं? नहीं ना, नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को, प्रिंटेड नोट्स में देखोगे वहां मिल जाएगा. ये लिख लो ऐसे, मेल्टिंग पॉट, सलाद बॉल, मोज़ेक मॉडल, मल्टीकल्चरलिज्म के पार्ट है ये. तो तब तक कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं, उनका ही कल्चर बना रहा. नोट, मोनोकल्चर philosophy or monoculturist philosophy gives
gives birth to philosophies like fascism and Nazism. Gives birth to philosophies like fascism and Nazism. At the extreme, dominant culture may adopt genocide as a means to remove the other culture. Genocide as a means to remove the other culture. अब अदर कल्चर के अंदर रिलीजन, रेस, ट्राइब, लैंग्वेज, एनीथिंग कैन कम, है ना? जैसे कि रेस के हिसाब से हॉलोकॉस्ट, एग्जाम्पल इज हॉलोकॉस्ट. ट्राइब्स के लिए हुत्सी तुत्सी ट्राइब्स जो हुआ था, हाँ, हिस्ट्री के अंदर आएगा. जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आएंगे ये सब. ठीक है, बाकी कुछ एक दो ऐसी टर्म्स हैं वो लिख लो. एक है डी जूरे और डी फैक्टो मल्टीकल्चरलिज्म. क्लासिफिकेशन ऐसे ऐसे बना लो, डी फैक्टो एंड डी जूरे मल्टीकल्चरलिज्म. डी फैक्टो का क्या मतलब होगा? इन प्रैक्टिकल, लाइक इंडिया, practically we are practicing multicultural. De jure means just in theory, not just in theory, in theory also. हम तो de facto de jure दोनों हैं. इंडिया तो de facto और de jure दोनों हैं. But there are certain countries where there is de facto de jure. किस किस को नहीं पता? Okay. De jure means in law. Whether law protects multicultural societies or cultures or not. Like all our fundamental rights, they protect different cultures. You cannot discriminate. The state will not discriminate on the basis of language, race, and religion. Protecting the different cultures, de jure. Like this is also found in America. Most of the time it is found in India. Constitutionally de jure we are multicultural. De facto means in essence, in practice, are we multiculturalist or not? क्या सच में आपके यहाँ पे multicultural ethos हैं? Do ethos of multiculturalism found in Indian context? Yes, here it is found. But supposedly, example किसका दिया जा सकता है? Maybe Japan. De facto there may be constitutionally. De jure there may be, but de facto discrimination is there. Discriminated on the basis of race. एकदम complete intermingling or complete is not there. Australia, yes, de jure it is there, but de facto not there. Anyone can come to Australia, but will the people become a multiculturalist society? No. Understood? Okay. और दो चार टर्म्स लिख लेते हैं. Liberal multiculturalism. Conservative multiculturalism. Liberal क्या होगा? Inviting, आइए.
डिफरेंट कल्चर्स के लिए ओपननेस होगी. कंजर्वेटिव में आ गए हो तो बैठो. That there will be not inviting attitude, but if multiculturalism has been imposed, then they will accept it. अब लिख लो वेस्टर्न पॉलिसी, वेस्टर्न पॉलिसीज टू अडॉप्ट विद मल्टीकल्चरलिज्म. वेस्टर्न ने क्या क्या तरीके अपनाए? वेस्टर्न पॉलिसीज टू अडॉप्ट मल्टीकल्चरलिज्म. Since 19th century, the monoculture of Western countries turned to multiculturalism. Therefore, bringing policy changes in European as well as Australian governments. They adopted multiculturalism as a policy. Number 1, dual citizenship. Many European countries accept dual citizenship. Second, protection to minorities. Acceptance of minority festivals and holidays. Acceptance of clothing and food habits of different cultures. Protective discrimination to increase. Representation of minority in government. But with increased globalization, West could not manage the multiculturalist societies. As Kenneth Markovitz said, multiculturalism in Canada will destroy the nationalism of Canada. In America, protective and conservative voices and parties have won. Conservative and protective parties have
1. In Australia, hate crimes and monoculturist have become popular. Similarly in Britain, similarly in France, लिख लो France, Germany, Britain, everywhere conservative voices आ रहे हैं. Similarly in Japan and Korea also. तो अब इन्होंने क्या करा? प्रोटेक्टिव पॉलिसी अपना ली. नाउ दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम देयर मल्टीकल्चरल पॉलिसी. पहले तो उन्होंने बड़े अच्छे से अपनाया, लेकिन अब प्रॉब्लम्स आई तो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दी मल्टीकल्चरल पॉलिसी. अब क्या कर रहे हैं लोग? टेस्ट्स, इमिग्रेशन टेस्ट्स, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस. लिख लो क्या कर रहे हैं. वेस्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम मोनोकल्चर policy, multicultural policy, moving away from multicultural policy. Essential test of language and lifestyle. Essential tests for language and lifestyle. Restrictions on immigration. Oath of nationalism. तीसरा क्या करवा रहे? ओथ भरवा लेते हैं. Oath of nationalism. In Britain, life in UK test. France, ban on Sikhs and Muslims for their dress code. वो तो पहले से भी तो, बट उससे कल्चर का हाँ बढ़ा दिया, कम करना चाह रहे हैं बेसिकली. बिल्कुल. criticism. Feminist philosopher Susan Moller-Okin wrote, inverted commas में लिखो, is multiculturalism bad for women? Is multiculturalism bad for women? According to her, ethnic cultures are against women. Ethnic cultures are against women. Therefore, should not be entertained. Should not be entertained. Example, in France, only one marriage allowed. But in the name of multiculturalism, French government allowed many wives in the name of multiculturalism. French government allowed many wives in Islamic culture, full stop,
Today, in Paris, more than 2 lakh multi-wife marriages or families, multi-wife families exist in Paris. Two lakh multi-wife marriages, families exist. Ayn Rand. Ayn Rand. Anthem. पढ़ा है किसी ने? पढ़ा? आई यस. फाउंटेन हेड पढ़ा है कि किसी ने इसका? नहीं. किसी ने पढ़ा फाउंटेन हेड ऑनलाइन? फाउंटेन हेड. If in your life you get time, anytime, मतलब जब भी, then read a book, Fountainhead by Ayn Rand. Lovely book. वो पढ़ के ही पता चलेगा. It is about something which cannot be explained. It can, जैसे ये है ना? जिसने एंथम पढ़ा है, क्या वो बता सकता है उसमें क्या है? नो. एसेंस वो स्टोरी है ही नहीं. वो स्टोरी है लेकिन जब तक स्टोरी बता सकते हैं लेकिन उसका एसेंस नहीं बता सकते आप. और वो जो स्टोरी है जब आप पढ़ोगे तभी आपको उसका एसेंस आएगा. वो नहीं, आप उसको स्टोरी बता के उसको खत्म कर दोगे. सेम इज विद फाउंटेन हेड. अगर किसी ने आपको उसकी स्टोरी बता दी, आपने समरी पढ़ ली, तो आपने उस बुक का एसेंस कर. नॉट ऑल बुक्स आर लाइक दैट. बाकी बुक्स का आप कर सकते हो, बट नॉट विद Ayn Rand. Okay. So Ayn Rand says that multiculturalism will lead to revolutionary balkanization. Will lead to revolutionary balkanization. Balkanization क्या होता है? Okay, balkanization is the concept where small countries or entities try to break away from major country. जैसे वो बोलेंगे कि नहीं, हम understand it like this. जब पाकिस्तान बना तो balkanization, it's the process of balkanization. When princely states wanted themselves to be independent, it would have led to the balkanization of India. हाँ, स्पेन में भी balkanization चलता रहता है. स्कॉट, वो भी balkanization है बिल्कुल. Okay, next point. Paul Schaeffer. Paul Schaeffer. In his essay, The Multicultural Drama. Yes, the division of USSR. So USSR balkanized. The multicultural drama said a nation can be united only if there is cultural homogeneity. A nation can be united only if there is cultural homogeneity. As multiculturalism leads to anarchy. Leads to anarchy. Multiculturalism in India. Next heading, multiculturalism in India. India is both de facto and de jure multicultural country. India is de facto and de jure multicultural country.
Next point. The basic philosophy of India is multicultural. First, उसमें मतलब एरो डाल के लिख लो. उपनिषद से एकम सत विप्रा बहुदंती. एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. The same truth we say by different words. सब ज्ञानी लोग अलग अलग तरीके से एक ही बात कहते हैं. सर्वे संतु, ये भी लिख देती हूँ. ये तो लिख लोगे यार. सर्वे संतु भविना है नहीं. सब सुखी रहे, लिख लो. सब सुखी रहे. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सब सुखी रहे. Next, Jain and Buddhist philosophy of tolerance. Roman, next point, Roman, Shakas, Huns, became assimilated, not assimilated, enriched the culture of India. Enriched the culture of India. Then came Islam. Next point, Islam. Led to synergy between two cultures. Synergy. Where architecture, clothing, food, music, etc. were adopted in Indian culture. While caste system and religious tolerance became part of Islamic culture. Leading to new Indian culture of Ganga Jamuna Tehzeeb. Leading to the new Indian culture of Ganga Jamuna Tehzeeb. कास्ट नहीं है उनमें सेक्ट्स हैं, बट कास्ट नहीं है. हमारे यहाँ तो कास्ट है. बिल्कुल एक बात नहीं है. कास्ट और क्लास में बहुत अंतर है. यहाँ पे कास्ट सिस्टम है. दीज आर एससी टर्न मुस्लिम्स, तो उनको वहां पे ट्रीट किया जा रहा है. ये इससे है क्योंकि कन्वर्टेड है ना बहुत सारे, तो इसलिए. तो वो जो कास्ट सिस्टम है वो सिर्फ कास्ट सिस्टम इंडिया की ही वो है, इंडिया का ही है, वो कहीं और है ही नहीं. वहां पे क्लासेस हो सकती है, सेक्ट्स हो सकते हैं, हायरार्कीज हो सकती हैं, पर कास्ट इंडिया से ही बना है. हाँ मैम, प्लीज रिपीट आफ्टर. फ्रॉम विच? वाइल कास्ट सिस्टम का
caste system and religious tolerance were adopted in Muslim culture, and this led to the emergence of Ganga Jamuna Tehzeeb. Okay, उसके बाद कौन आए? Christians brought in the ideas of Renaissance, religious reforms, scientific reason, which became part of Indian culture, while Christianity and West learned about spirituality and tolerance. Developing the beautiful mosaic culture of India. और किस किस के अंदर टॉलरेंस ये रिलीजियस मल्टीकल्चरलिस्ट दिखता है? अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा, एग्जाम्पल्स में लिख लो या कुछ भी डाल के लिख लो. अशोकन पॉलिसी ऑफ धम्म मल्टीकल्चरल का ही एक वो है एस्पेक्ट. आयन अकबरी ऑफ अकबर, हमारे यहाँ तो मतलब देखो कल्चरल मल्टीकल्चरलिज्म हम तो भयंकर लेवल पे हैं. जैसे रिलीजियस मल्टीकल्चरलिज्म, हाउ मेनी रिलीजन्स आर देयर इन इंडिया? n number of religions. Major religions, minority religions, minority के बाद भी बहुत सारे religions. And within a religion, many sects. So, religious multiculturalism हमारे यहाँ पे बहुत है. और religious multiculturalism को protect करने के लिए we have Constitution, Article 30. Article 30. Then linguistic multiculturalism. How many languages are there? 700 plus. Official तो कुछ है ही नहीं. हाँ, That's classical language. many classical languages. Apart from that, there are many languages, है ना? Article 22. नहीं, article sorry, this schedule 8th या 7th नहीं 8th है शायद, चेक कर लेना. 7th है, 7th है ये, मेरे सबसे 8th होना चाहिए, चेक कर लो एक बार. शेड्यूल 8 में है ना लैंग्वेजेस? अरे कौन सा है? 8th है ना? अरे चेक कर लो 2 मिनट में. 8th है ना पक्का? तुम लोग फालतू में मतलब अभी सब है 7th. मैंने कहा हो सकता है यार मेरे को बहुत टाइम हो गया, मुझे गलत याद हो. ट्राइबल लिखो तुम, आता जाता कुछ है नहीं. हाँ चलो लिखो ट्राइबल एंड रेशियल डाइवर्सिटी. हमारे यहाँ बहुत सारी टाइप की रेसेस हैं. मोंगलॉइड, हमारी बीच के अंदर कॉकेशियंस भी हैं, और द्रविडन इधर वाले साइड्स में भी बहुत सारे. एंथ्रोपोजेनिकली अगर आप देखोगे तो 4 मेजर रेसेस मिलती हैं इंडिया के अंदर. लिखवाऊं क्या उनके नाम? नेट पे सर्च कर लेना, नेट पे सर्च कर लेना.
4 कौन सी रेसेस मिलती हैं इंडिया में? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बताओ और क्या चाहिए? हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इन इंडिया। प्रॉब्लम क्या होती है मल्टीकल्चरल होने से इंडिया को? ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, रायट्स, सन ऑफ द सॉइल। महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, स्पेसिफिकली इन मुंबई, they started targeting UP and Bihar people. Even in Delhi or all these northeastern people are sometimes targeted because of their race. Similarly, language, वो तो आज तक मैं देख रही हूँ, English Hindi conflict. If I speak in English, there are 10 people who will say, please speak in Hindi. We are not able to understand. If I speak completely in Hindi, or rather mixed Hindi, then few people will say in English only. So language is still a problem. Still we are trying to find a solution. 3 language formula, which language to be made as an official or rather national language. There is no national language, है ना? So all of these things, ये तो सब लिख लोगे, इस सब में तो कुछ खास नहीं है, लिखवा देते हैं. Vote bank politics. राइट्स तो तुम्हें पता है, नाम तो लिख ही लोगे 10-15 के. Even this Khalistan problem is what? A multicultural problem. No? Multicultural problem leading to balkanization. कश्मीर वाला प्रॉब्लम भी क्या है? Political problem. Like, major political problem. Which one? Pakistan, So it starts with the cultural thing, and then start increase interest in our country so that they are moving. yes. So until and unless there is a difference, what will they exploit? The difference is there, which other countries utilize to. They are not taking the Pakistan side of Punjab. They are taking the only Indian side of Punjab is our Khalistan. Purely political. Understand like this. Why is there a demand for Khalistan? Why? Because these people are saying that a certain culture, but problem is why the same demand is not there in other cultures. Vested interest नहीं है, वहां पे vested interest develop हो गया. This is the vested interest makes it a demand, political demand. But the real cause of anything is the multiculturalism. If there is no difference, can you go and tell any other person कि चलो आप एक बिहारी को बोल सकते हो चलो खालिस्तान बनाते हैं, बिहारी बनाएगा क्या खालिस्तान? क्यों नहीं बनाएगा? ओके भाई, मेरे को क्या मतलब, मैं तो गुड़ और मक्के की रोटी खाता भी नहीं हूँ, मैं तो लिट्टी चोखा खाता हूँ, है ना? So it's a cultural problem which turned into political problem. Okay. बाकी लैंग्वेज वाला तो पता ही है ना? ठीक है. और हमारे मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट तो हमारे सारे फ्रीडम लीडर्स जितने भी हैं, है ना, उनको आप डाल सकते हैं. Want to preserve and protect. Okay. लेकिन इसमें भी क्रिटिसिज्म है. Again, women rights का कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करते करते यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग नहीं लगा पाए. इट्स बिकॉज ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी. रिलीजन कल्चर का ही पार्ट है, इसलिए लिख लो. आज तक हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. वी आर वर्किंग विद
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Minority religions are again asserting sometimes, they say, we are not given due share. At the same time, there is appeasement of minorities also. So both of these things are going on. Not GS type. GS type, देखो हम इसके अंदर कुछ, जब हम ये लिख भी रहे हैं तो हम इसे बहुत GS type नहीं लिख रहे हैं. We have to remain stuck to the core of the topic. वो लिखो, बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो, बस हो गया. और बताओ, और क्या चाहिए मल्टीकल्चरलिज्म में तुम्हें? क्वेश्चन देख के क्यों नहीं आए? कोई लाया? दिखाओ पॉजिटिव्स क्या है. अच्छा पॉजिटिव है कुछ मल्टीकल्चरलिज्म का? बताओ क्या है मल्टीकल्चरलिज्म के? पॉजिटिव्स भी लिखो. पॉजिटिव्स नंबर 1, डाइवर्सिटी brings in creativity and innovation. Diversity brings in creativity and innovation. It enriches the lives. It enriches the lives and society even. And society. Enhanced tolerance among people. Basically सोच लो, art, music, cinema, all of this is so vibrant because of multiculturalism. How many movies can you make on only one culture? Now in our movies we see the diversity, and that is the beauty of it. अगर वो ब्यूटी हो ही नहीं, अगर वो डाइवर्सिटी हो ही नहीं, हमारे यहाँ पे वो भी बनाते हैं, क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग पे भी कुछ मूवीज बनाते हैं, कुछ भाईजान टाइप की मूवीज भी बनाते हैं, कुछ एकदम कोर हिंदू वैल्यूज पे भी मूवीज बनाते हैं, मराठी मूवीज भी बनती हैं, टॉलीवुड की मूवीज, कन्नड़ मूवीज, तेलुगु मूवीज, ऑल ऑफ दीज मूवीज आर आल्सो देयर. So much diversity in art. Music, Carnatic music, this music, that music, it's because of multiculturalism. So art, cinema, music, dance, all the entertainment things enrich because of this multiculturalism. Economic activities, all economic activities. एक कितने सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, दिवाली आती है तो पटाखे लगा लेते हैं, ईद आती है तो सेवैयां लगा लेते हैं या वो वाली मिठाइयां लगा लेते हैं, होली आती है तो वो लगा लेते हैं, और जब क्रिसमस आता है तो ट्रीज बेचने लगते हैं. दे स्टार्ट सेलिंग क्रिसमस ट्रीज एंड Santa Claus dresses. Then Janmashtami comes, they start hanging Krishna dress, bansuri and matka. So what is this? Economic activity. It increases. हाँ, हॉलीडेज भी मिलती हैं. ठीक है, ठीक है. हाँ, आप क्या बता रहे थे मुझे? एनीथिंग एल्स? क्वेश्चंस. अच्छा, हम लोग हाँ क्वेश्चंस देख रहे थे, एक बार तो क्वेश्चन देख लेते. लिखो, लिख के लाओगे घर से? तुम लिख के तो लाते नहीं हो. The term multiculturalism has been used in both. सुन लो, बताओ क्या कर सकते नहीं कर सकते हो.
The term multiculturalism has been used in both descriptive and normative sense. Discuss. Descriptive means it's the truth in West also, in India also, and it is also a prescriptive thing, normative thing, where how should a multicultural society be? It should be tolerant, it should be this, that, all of these things, protect the minority rights, और ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें. Is multiculturalism a boon or a bane? Discuss. Is it a boon or a bane? Boon. But if managed properly. If not managed, then bane, balkanization, conflicts. यही है. सेकुलरिज्म के देख लिए थे. Can we consider freedom from domination as one of the justifications for multiculturalism? Freedom from domination. जब डोमिनेशन होगा तो एक कल्चर डोमिनेट करेगा, एसिमिलेशन, मोनोकल्चर बनाने की कोशिश करेगा, which will lead to fascism and Nazism, genocides. And only when there is freedom from domination, that multiculturalism can flourish. That only then there will be equal respect for all religions, or all cultures rather. ठीक है, जाके देख लेना, लिख के भी देख लेना. ठीक है, ओके. छोटा सा वो ले लो. हम लोग कल वो करेंगे. कल social development and progress is a very small topic, and a very, very small topic. After that we will start with our नहीं last topic of sovereignty. Sovereignty तो बचा है हमारा. हाँ. अच्छा, अरे सोशलिज्म तो तुम्हारा नहीं है. यस यस यस, ठीक है. सोशलिज्म भी कल कर लेते हैं, है ना. हाँ, वो एक ही दिन के बाद है, वो तो उसमें कुछ नहीं. ऑस्टिन, बॉर्डन, लास्की और कौटिल्य, 4 लोग हैं. चारों का हम लोग पढ़ लेंगे. What is social development and progress? बताओ, यहाँ से शुरू करो. What is social development and progress? What is social development according to you? In every sectors of the society, which Okay. Equality. Equality. Justice. Equality. Development of the complete society. What is social development and progress? High ranks in HDR. Okay. Equal opportunities. Opportunity and welfare. Human development with respect to society. Okay. हाँ, अब आओ तुम. Yes, yes, yes. Progress can be in any sector, isn't it? Now this definition of अभी बताती हूँ इरफान. This definition of social development and progress, this has also changed. The things which were considered as social progress in ancient times are no more social progress, no more social development, and things which we consider now as social progress may not remain social progress after some time. Things which we consider as social development and progress are different from what other countries people think. There are countries according to which if they can earn sufficient basic needs, then they will relax. They are not into show off business. Yes. So different. So in Bhutan, happiness index.
They are measuring it through happiness of people. Similarly, a climate person will try to measure social development as how clean is your environment? Green GDP, green index. Feminist will say how women develop, how empowered the woman is. That is the indicator of social development. Marxist will say if there is classless society, then there is social development. Capitalism or liberalism will say the maximum freedom that a society has, economic and otherwise, that will be social development and progress. So different people, different definition. Plato will say, कैसे नहीं पता? नहीं बताओ. According to Plato, how should the society be arranged? Three, very good. Philosophers, warriors, and producers. Very right. So according to Plato, society is most developed, will develop socially when philosopher is the king. Philosopher king is there, then there will be social development and progress. And according to him, when people are following whatever they are doing, whatever their duty is, then it is social development. Society will develop. According to Aristotle, when rich is made more richer, when equals are treated equally and unequals are treated unequally, then there will be social development. Make the richer more richer so that they can utilize. Social development. There are people like Hobbes. ये सब notes में मिल जाएगा, समझ लो बस. Hobbes, according to Hobbes, if there is a central authority, then there will be social development, so that this central authority can lead people to development. Locke क्या कहेगा? He will say central तो होना चाहिए, but on the consent of people, people should agree that life, liberty and property, these three things should be given to individual. ये एकदम sacrosanct है, किसी की life, liberty और property आप नहीं छीन सकते. Apart from that, government can help in other areas for social development. Rousseau will say general will. Social contract, general will. If general will is there, if people are following general will, then there is social development. Gandhi ji will say, when people are moral, when there is Ram Rajya, when people have change of heart, then there is spiritual awakening and enhancement, then there is social development. Ambedkar ji will say, when there is no caste discrimination, no discrimination of genders, when there are no economic hierarchies, economic and social hierarchies, then there will be social development. Amartya Sen will say, capability. When the people will become capable, what are, हो गया वैसे तुम्हारा चैप्टर, लेकिन कल हम एक दो चार्ट्स बना लेंगे तुम्हारी खुशी के लिए. हाँ, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इज इट फिक्स्ड? It is according to the context and culture. कल्चर के हिसाब से सोशल डेवलपमेंट होती है. यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट अलग है इंडियन कंटेक्स्ट में. इवन इन इंडिया
You go to Kerala, their social understanding of development के कौन आदमी ये सोसाइटी डेवलप हो गई है वो अलग तरीके से जज करते हैं. इन यूपी बिहार अलग तरीके से, इन नॉर्थ ईस्ट अलग तरीके से. Even within that, the development, social development is defined differently by different cultures. किस चीज को अच्छा मान रहे हैं हम, किस चीज को डेवलपमेंट मान रहे हैं, किस चीज को प्रोग्रेस मान रहे हैं. Are we saying that if we increase our GDP, is that progress? किस चीज के नोट्स प्रोवाइड, तुम लोगों को बुकलेट्स नहीं मिली क्या? क्या pages are missing from the books? हाँ, 30 pages are missing. बुला के लाना सिद्धार्थ को. अच्छा, उन्होंने बताया. नहीं तो we will send you the soft copy. डाउनलोडेबल कर देंगे, मैं पूछ लेती हूँ. कौन से? अच्छा, कुछ बच्चों के पेजेस मिसिंग है क्या बुक में सिद्धार्थ? वापस कर दे तो न्यू इशू हो. बाकी हमारे स्टोर में सॉफ्ट कॉपी भेज दो उन्हें उन 30 पेजों की. बुक मंगाना और वापस भेजना तो थोड़ा वो हो जाएगा. कन्वीनियंट होगा तो वो कर देंगे, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भेज. ठीक है ना, वो कर लेते हैं. अच्छा, और दूसरा क्या बता रहे थे? हाँ, पीडीएफ डाउनलोड. कुछ हमारे नोट्स की पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं है क्या? एलएमएस पे वो डाउनलोडेबल नहीं है. करवा दो. जेंडर कास्ट वाले जो नोट्स हैं उनको डाउनलोडेबल करा दो, है ना, वो डाउनलोडेबल हो जाएंगी. और कबीर, कब तक क्लास चलेगी? परसों तक, है ना. फेयरवेल आज क्या तारीख है? 8. कल लंबी क्लास कर लें, कल खत्म कर दें. डाउनलोड तो हो रहा है. ऑनलाइन वाले बच्चे, व्हाट अबाउट योर फेयरवेल? We will send you emojis of हाँ, लास्ट डे सर को बोले थे, तो उसके बाद तो पता नहीं लास्ट डे शायद जो क्लास हो सकता है, दूसरे लोग सर को बोले थे फ्राइडे को. हाँ, जो सर नाम कल लंबी क्लास करके कल खत्म कर देते हैं, है ना. टाइम, are you people comfortable coming at 2? No? क्या कैंसिल करा दो, तुम तो यहीं के बच्चे हो. अच्छा चलो ठीक है, चलो 3 to 7 कर ले. 3 to 7 कर ले, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा है. देखो, सोशल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल. ठीक है. सोशलिज्म तुम्हें, अब तुम सोशलिस्ट बन चुके हो, इसलिए सोशलिज्म अपने आप के अंदर इज, so when we will read, you will understand what it is. So real chapter that we have to do now is sovereignty. This is one chapter which requires some understanding. ठीक है, तो वो हम, अगर आप लोग सही साथ दो तो हम कल फिनिश कर सकते हैं. You are with me? Okay. बीच में चाय पिलाती हूँ तुम लोगों को, ठीक? मतलब बहुत डिमांडिंग बच्चे हो तुम.
ये तो मल्टीकल्चरलिज्म भी पढ़वा देती हूँ, ये इसमें डलवा देती हूँ तुम लोगों को उसमें ही, है ना, LMS पे, ठीक है, या फिर तुम लोगों को इसकी कॉपी दिलवा दो। ओके ओके, बाय बाय। 3 से 7 कल।